In our series of lectures on Indian polity, we will be dealing the committees of the Constituent Assembly. These committees have played a very pivotal role in shaping our constitution. Constituent Assembly. इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं इस टॉपिक पे, let me put it across to you that there were 15 main committees to the Constitution in the Constituent Assembly and several other subcommittees and minor committees. And minor committees. Okay. Now, before we proceed ahead with the committees and their chairpersons, the important thing is that the legal advisor, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, the legal advisor of the Constituent Assembly was Sir B.V. Rao, Bengalu Venkat Rao. Huh? Dr. B.V. Rao. Dr. B.V. Rao. Then, friends, we come to the most important committee of the Constitution, that is the drafting committee. It was the drafting committee headed by Dr. Bhimrao Ambedkar, which actually drafted or wrote the Constitution. It had 7 members. Okay. First, Dr. Bhimrao Ambedkar. He was the chairman of the drafting committee. Then we have RAJIV Krishnaswamy Iyer. क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2-3 बार एक क्वेश्चन आया है कि फलाने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कि नहीं थे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. तो 7 का नाम जानना, एंड ऑल द 7 वर लीगल लिमिनरीज इन देयर ओन एमिनेंस. दे वर क्वाइट वेल नोन पीपल. ठीक है, तो इनका एक लिस्ट दिमाग में रखिए. RAJIV कृष्ण स्वामी अय्यर, जिनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि हमसे ज्यादा लॉ जानते हैं, है ना. एंड देन N. गोपाला स्वामी, then we have K. Munshi,
then Muhammad Sadullah, and then we have B.L. Mittar, another legal luminary, B.L. Mittar, and finally Durga Prasad Khetan, D.P. Khetan. Friends, the drafting committee is actually acknowledged as the most important committee of the Constituent Assembly. Now, from here on, we go ahead to the next important committee, that is the Objectives Committee. The Objectives Committee was headed by Pandit Jawaharlal Nehru, and this Objectives Committee was the committee which put forth the proposal for the preamble, objective resolution for the preamble of the Constitution. है ना? तो Objectives Committee, this is the second important committee. Headed by Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru. This Objectives Committee put forth the Objectives Resolution for the preamble. ठीक है? Then we come to the ad hoc committee on the national flag. This was headed by Babu Rajan Prasad. Right? This, as the name suggests, is an ad hoc committee. इसका मूल मकसद था नेशनल फ्लैग के प्रारूप को फाइनलाइज करना. The national flag was adopted by the Constituent Assembly on the 22nd of July 1947. ठीक है? 22nd of July 1947. Thereafter, the purpose of this assembly, this committee became redundant, right? अब ये नेशनल फ्लैग चूंकि अब मौका आ गया, मैं बता दे रहा हूँ, इट वॉज डिजाइन बाय द आंध्रा पेट्रियट पिंगले वेंकैया, है ना? ही वॉज द पर्सन हु डिजाइन्ड इट, हाँ, पिंगले वेंकैया. उसका मतलब, you know, there was a crude version of it. After that, some minor alterations were made, but more or less, he is supposed to be the primary designer of the national flag. It was adopted by देखिए 18 जुलाई को किंग जॉर्ज द 7th ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पे दस्तखत कर दिया था 1947, 18 जुलाई 1947. और 4 दिन बाद, अब जब नया राष्ट्र होने वाला था, तो भाई राष्ट्रीय झंडा तो चाहिए था ये ना, तो 4 दिन बाद ये अडॉप्ट किया गया. लेकिन ये कमिटी जिसने कि इसका प्रारूप तैयार किया, इसको एक्सेप्ट किया, उस पर तमाम प्रपोजल्स, उसके चेयरमैन डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, देन स्टीयरिंग कमेटी, देखिए जो क्वेश्चंस पूछता है अधिकतर ड्राफ्टिंग कमेटी पे तो ये पूछता है कौन मेंबर था कौन नहीं था, 7 मेंबर जानना जरूरी है, नहीं तो और सब कमिटीज पे जो क्वेश्चंस पूछता है बस यही पूछता है कि हु वाज द हेड ऑफ इट, या फलाने इनमें से किस कमेटी के हेड थे, या तो नाम दे देगा या उस पर उस कमेटी के हेड के रूप में पूछ लेगा। बात समझ रहे ना? तो वही स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, and then Committee on Rules of Procedure, Committee on Rules of Procedure, ये जो है इट वाज आल्सो हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए चूंकि आधिकारिक चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो जाहिर तौर पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्टीयरिंग कमेटी का हेड इन्हीं को होना था, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एंड देन वी कम टू फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। कैसे कैसे पेमेंट्स हो स्टाफ मेंबर्स के, कैसे कैसे फाइनेंस अरेंज किया जाए, क्या क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट हो, तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी इट वाज अगेन हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नाउ then the 7th important committee, powers and functions of the Constituent Assembly, Committee on the Functions of the Constituent Assembly। This was chaired by another great man, गणेश वसुदेव मावलांकर। ठीक है, ये नाम आपने सुना है, इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं। जब पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई तो यही व्यक्ति पहला स्पीकर बना फर्स्ट लोकसभा का 1952 में, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये मत भूलिएगा प्लीज। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। Then we come to the 8th important committee, and that is the Union Powers Committee. The Union Powers Committee was headed by पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो आपका पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन गवर्नमेंट का, ये सब इसी कमेटी ने तैयार कराया। ठीक है ना, यूनियन पावर्स कमेटी। जवाहरलाल नेहरू।
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। देन स्टेट्स कमेटी, ये प्रिंसली स्टेट्स पे था, जो इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया में, उसी पर स्टेट्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। इसके बाद वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, है ना, या फंडामेंटल राइट्स कमेटी, जिसने कि पूरा का पूरा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को निरूपित किया, डिबेट किया, एंड ऑफ कोर्स इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। Then Committee on Minorities and Scheduled and Excluded Areas, तो जो माइनॉरिटी राइट्स की बात होती है वो, और पूरा शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी था, है ना। इसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेयर किया। And scheduled and excluded areas, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। देन वी कम टू 13, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स कमेटी। अब जो है स्टेट्स का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो प्रोविंशियल कमिटी ऑन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविंशियल पावर्स कमिटी, ये भी सरदार वल्लभ भाई ने। देखिए, सेंट्रल पावर्स कमिटी, यूनियन गवर्नमेंट कमिटी, जवाहरलाल नेहरू ने चेयर किया। प्रोविंशियल पावर्स कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेयर किया। केयरफुल रहिए, हाँ। प्रोविंशियल पावर्स कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, कमिटी ऑन जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल राइट्स। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, ठीक है, उनको आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। उस पर रिट्स मैंडमस हुआ, हेबियस कॉर्पस हुआ, सर्टियोरी हुआ, क्वो वारंटो हुआ, प्रोहिबिशियो हुआ, आप रिट्स के मार्फत वो फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर आपको सरकार ने मतलब कंप्लाई नहीं किया,
तो आप नहीं ले सकते, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। तो सच पूछिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जिस कमिटी ने फ्रेम किया उसके हेड सर टीबी तेज बहादुर सप्रू थे, है ना। कमिटी ऑन justiciable and non-justiciable rights, इसको हेड किया सर तेज बहादुर सप्रू। चचेरे मतलब चाचा लगते थे जवाहरलाल नेहरू के, ही वॉज अ डिस्टेंट कजन ऑफ मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, सर तेज बहादुर सप्रू। अब सवाल ये कि जस्टिशिएबल राइट्स कौन है भाई? ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स। और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स कौन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, क्योंकि इसको कोर्ट में आप नहीं ले सकते, इसको कोर्ट में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो सर तेज बहादुर सप्रू ने इसको चेयर किया। अब याद रखिएगा, सर तेज बहादुर सप्रू ही वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया और पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर तेज बहादुर सप्रू बनाए गए। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 76 में है, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ही वाज मेड द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया as per the provisions of the Government of India Act of 1919, popularly known as Montagu-Chelmsford reforms, ठीक है। तो और संविधान में फाइनली आर्टिकल 76 के अधीन अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, दिमाग में रखिएगा, हालांकि अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ पंद्रहवां, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, इसको चेयर करने वाला व्यक्ति के मुंशी, ठीक है। के मुंशी एक बड़ी सेलिब्रेटेड बैरिस्टर एंड अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, आई फॉलो द महात्मा, है ना। तो ये किताब मत भूलिएगा, दो बार यूपीएससी में इसको पूछा जा चुका है। और आपके झारखंड का ट्रेंड ये है कि पहले क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है, 500 साल बाद वो झारखंड में पूछ देंगे, है ना। आई फॉलो द महात्मा, इनकी आत्मकथा का नाम है। एट द फीट ऑफ द महात्मा किसने लिखा है? हैं? ये भी टैली में क्वेश्चन आ चुका है, राजन प्रसाद। महात्मा के चरणों में है, एट द फीट ऑफ द महात्मा,
है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। सब स्टॉलवर्ड्स हैं, दिमाग में रखिएगा। लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये किताब बहुत कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि आज़ाद साहब ने कहा था कि लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद ही इस किताब को प्रकाशित की जाए। उसमें बहुत सी बातें कंट्रोवर्शियल उन्होंने नेहरू के बारे में भी लिखी थी, है ना। तो इंडिया विंस फ्रीडम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भाई, प्लीज। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, जानते ही हूँ। कान गरम करेंगे। अरे जवाहरलाल नेहरू। अरे भाई, इट्स अ क्लासिक, है ना। ठीक है। हाउस कमिटी, बिजनेस कमिटी में अंदर क्या था? बिजनेस पॉलिसीज, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। नहीं, कि कैसे कौन बिल पहले लाई जाएगी, कौन बाद में लाई जाएगी, उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, मतलब बिजनेस ऑफ द हाउस कंडक्ट करने के लिए। ये थोड़े है कि किराने का दुकान खोलने के लिए, बिजनेस ऑफ द हाउस कंडक्ट करने के लिए, है ना। नाउ 16 जो हो गया हाउस कमिटी। हाउस कमिटी डॉक्टर पताभी सीतारामैया। डॉक्टर पताभी सीतारामैया is the official biographer of the Congress, the official historian of the Congress, let me put it this way। हाँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, अभी मैं बता रहा हूं आपको इनके बारे में। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द कांग्रेस। इन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी है, जो कि कांग्रेस की आधिकारिक इतिहास माना जाता है, द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, यही वो व्यक्ति थे जो कि त्रिपुरी कांग्रेस में सरदार पटेल के खिलाफ, अरे सर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़े थे प्रेसिडेंट के लिए। और गांधी जी ने कहा था कि द डिफीट ऑफ पताभी सीतारामैया विल बी माय डिफीट। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 13 मेंबर खुल के इनके पक्ष में थे। इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको चुनाव हरा दिया। नेताजी का ये कथ था, ही वॉज इमेंसली पॉपुलर अमंग कांग्रेस कार्डर्स, है ना। महात्मा जी का
ये कहने के बावजूद डिफीट ऑफ पताबी सीतारमैया विल बी माय डिफीट, इसके बावजूद जो है ये चुनाव हार गए, है ना। दिस वाज द सेम पताबी सीतारमैया। एंड देन कमिटी फॉर सब कमिटी ऑन ट्राइबल अफेयर्स, है ना। ये 15 हुआ था ना, 17 सब कमिटी ऑन ट्राइबल अफेयर्स। ये जो है डॉक्टर गोपीनाथ बॉर्डरलोई, फादर ऑफ मॉडर्न आसाम, and then 18th committee for reviewing the constitution, कि सब सही है कि नहीं है, तो उसका अध्यक्ष उसी को बनाया गया। इसके बारे में भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि ये हमसे ज्यादा कानून जानते हैं, एंड ही वाज अ लीगल लुमिनरी, हाँ, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। तो सोसाइटी कमिटी फॉर रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो दैट फिनिशेज योर कमिटीज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला क्लास हम लोग हिस्ट्री पे आ जाएगी, कभी पॉलिटी कंटिन्यू किया जाए, पॉलिटी कंटिन्यू किया जाए, वेरी गुड। तो अगला क्लास द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्शियली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे आपका जो है ये कैबिनेट मिशन आया, उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, क्या क्या संविधान कैसे तैयार हुआ, तो एक क्लास का टॉपिक है वो, संभवतः आधा ही क्लास कह लो। उसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है ना। प्रेम्बल हम लोग कर ही डाले हैं, ठीक है, सीधे फंडामेंटल राइट्स पे आ जाएंगे, राइट। तो अभी दिस एंड्स द टॉपिक। और 5 मिनट आप चाय पी लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर सेकंड पेपर शुरू करते हैं।